So you know Syenite. Who can say what is Syenite? You have already studied IUGS. Yes, that's the thing. So alkali feldspar will be more, na? So when you are drawing the total alkali, sorry, IUGS diagram, and yes, about the so IUGS classification QAPF diagram, QAPF diagram. So here cyanide comes, na? Here cyanide comes, cyanide here, cyanide. This is cyanide, monzonite, monzodiorite. So now the thing is, this cyanide is highly saturated with alkali feldspar. Alkali feldspar. That is orthoclase feldspar, or you can say potash feldspar. So basically, cyanide is a rock, or you can say cyanide is a plutonic igneous rock, which is highly enriched in alkali feldspar content. Okay, that is cyanide. So in case of cyanide, you can classify cyanide. How? How you can classify cyanide? You already know that. This is the cyanide. Okay. Sorry, this is the quartz cyanide. Na? This is the quartz cyanide. And this is the cyanide. Okay. This is the cyanide. This is the alkali feldspar cyanide. Alkali feldspar cyanide. Okay. This one is the alkali feldspar quartz cyanide. No, quartz cyanide. And this one is void bearing cyanide. Void bearing cyanide. Okay, and this one is void cyanide. Okay, void cyanide, or you can say this is as nepheline cyanide. Okay, nepheline cyanide. So you already know what is this classifications are, classifications of cyanide. So you can say that if quartz is what, if quartz is, this is your, if this is quartz, if quartz is like this is 10% na, or 20%. This line is considering, I am considering this as 10%. You just check the book there what this is 10% or 20%. Okay. So you can just write that if quartz percentage in cyanide rock, if quartz percentage is like 5 to 10%, then it will be called as quartz cyanide. Then if it is less than 5%, then it will be called as cyanide. If alkali feldspar content is greater than 90%, it is called as alkali feldspar cyanide. If quartz percentage is 5 to 10% and your alkali feldspar is greater than 90%, then it is called as alkali feldspar quartz cyanide. So easily you can classify the cyanide classification na. So you already know the IUGS classification, so you can just classify. So let us write what is cyanide, alkali feldspar cyanide. From IUGS, what we are getting? We are getting cyanide, then your quartz cyanide, then your alkali feldspar bearing, no sorry, quartz bearing alkali feldspar cyanide, alkali feldspar cyanide. Okay, then your quartz bearing alkali feldspar cyanide. Okay, then void bearing alkali feldspar cyanide, then void cyanide. So basically, these are the classifications based on QAPF diagram. You just write down the. You have already written the percentages of minerals available. Okay. So now this cyanide, what happens? Cyanide is a highly felsic rock. Okay. So what do you think? If we are how it will be originated? You have already know that very much of rocks, how fractionation is going on, how differentiation is going on, how partial mating occurs. So comment. So please comment 2 or 3 petrogenesis models, or just comment that
how can be a Syenite, how can be a rock rich in such amount of alkali feldspar can be formed? Okay, comment on that. Or for cyanitic magma, you see such amount of feldspar, such high amount of feldspar cannot be availed from the primitive magma like the peridotic magma or basaltic magma, okay, or directly from the mantle chamber, lahergolitic mantle or garnet Harzburgitic mantle. So you cannot avail this type of enrichment in feldspars. Okay, so for this process, actually what happens, the granites, already formed granites undergo partial melting and very low degree of partial melting. Very low degree of partial melting. As you know, potassium is compatible or incompatible? Anyone? HFSC, LILE, potassium is HFSC or LILE or compatible? So basically potassium is LILE, okay. So this is incompatible in solid. Na? So large ion lithophile element. So basically when low degree of partial melting will occur, so this is incompatible. So this will come to the liquid phase. Na? So this will enrich in liquid phase instantly when the partial melting starts. ओके if एक रॉक है ग्रानाइट तो वो पार्शियल मेल्टिंग स्टार्ट कर देगा तो थोड़ा सा भी अगर मेल्ट रहेगा आज पोटासियम इज वेरी इनकम्पैटिबल एलिमेंट सो वो क्या करेगा वो पूरा मेल्ट को चला आएगा ना पोटासियम तो अभी क्या होगा जो लो डिग्री ऑफ पार्शियल मेल्टिंग हुआ था तो थोड़ा सा लिक्विड निकला था तो ये वेरी लेस अमाउंट ऑफ लिक्विड वाज देयर so all the potassium will be reached in that melt and that melt will go and like your volcanism or sorry intrusion that will give rise to the cyanitic composition. Okay, if it undergoes high degree of partial melting, what will happen? That will be granodiuretic or you can say granitoid in composition. Okay. More calcium in solution which will produce plagioclase exactly. So high degree of partial melting will produce plagioclase. Calcium high degree of partial melting will release the calcium and sodium contents from the granite. So you will be finding a granodiuretic or granitoid composition. Okay, granitoid composition, not exactly granite. As you know, granitoid is a group of rock. So you will be finding a granitoid composition. Okay, so that's the thing. So you know how Syenite is originated, how Syenite is composed of. Let us see the slides. What extra thing is there? I have missed. So Syenite are plutonic. There is nothing much in the Syenite rock. Okay, Syenite, Komatiite. There is a MORB, Mid-Oceanic is also there is nothing much in there. So Syenite are plutonic rocks composed of essentially potassium feldspar. Okay, and less amount of quartz and plagioclase as you know the QAPF diagram. So quartz cyanide, you can write this like your classifications. Okay, you just write these classifications. I'll upload the slide by writing the classifications. Okay, I so this is the classification already I have told you. Sometimes cyanide contain mafic mineral like hornblende and biotite. This one is important. Epidiomorphic and less commonly porphyritic texture. Okay, subhedral to and subhedral to euhedral grains. Okay, trachetic texture also says that shows trachetic texture that is preferential orientation to the flow direction. Na? Trachetic texture. Okay, and okay, that's the thing. This one also. Cyanide can be hypersolvous and subsolvous. Okay, same. Tell me what is hypersolvous and subsolvous. Okay, so basically hypersolvous is single feldspar and low H2O pressure. Okay, and subsolvous is dual feldspar and high H2O pressure. You already know the Albright orthoclase system. Okay, Albright orthoclase system how in limited solution single feldspar and dual feldspar forms. So like that, in case of granite, you have known that the hypersolvous granite and subsolvous granite like that.
in case of Syenite, you have hypersulfous Syenite and subsulfous Syenite. So the hypersulfous variety will show porthite, antiporthite, mesoporthite, this texture. Okay, what is porthitic texture? So this is porthite texture. The hypersulfous will show porthite texture. These are cyanides have low color index. That means more melalocratic in nature. Okay, usually occurs in volcanic plugs, minor intrusions associated with larger bodies of different composition, variable composition. Okay, variable composition. So this is the occurrence of cyanide. Okay, so can you draw the as you know, Syenite is rich in potash feldspar, highly rich in potash feldspar. So tell me, what will be its RE pattern? Just a characteristic, just a small characteristic. Enriched in LRE. Okay, it will be enriched in RE. It will be enriched in RE because of low degree of partial melting is going on. So it will be enriched in RE. But in case of already it is undergoing partial melting from the granitic rock, na? So it will depend. Another thing about europium potash feldspar shows negative anomaly, na? Europium, that's why granite shows negative anomaly, plagioclase shows positive anomaly. Why granite shows negative europium anomaly? Because of it is actually the bookish granite is enriched in feldspar, na? So the feldspar cyanide will be showing a negative europium anomaly. Okay, so that will be the RE pattern. Okay, negative europium anomaly it will show. You can draw like this. Okay, you can draw like this. So this is the RE pattern. Okay, next we are moving to normal orthocyanide can form both with both silica saturated and silica undersaturated cyanide or series. So we can from orthocyanide we can get from silica saturated and silica undersaturated. And in case of nepheline calcilate silica, you have already known that. Okay, in nepheline calcilate silica, from a silica saturated melt and silica undersaturated melt, how we are getting a acidic rock and we are getting a basic rock. Na? Okay. So petrogenesis already we have studied petrogenesis. Okay. So that's things we are written products of alkaline igneous activity formed in thick continental crust areas in subduction zones produced by very low degree of partial melting of granitic or igneous photolith as potassium is incompatible. So high degree of partial melting will release calcium and sodium and a plagioclase rich rock will be formed. Okay, so this is cyanide. Moving to the MORB mid oceanic ridge basalt. So, MORB, you can say MORB is the most voluminous rock in the earth crust. Okay, MORB is the most voluminous rock earth crust. Most voluminous. Okay, voluminous. So, almost entirely the oceanic crusts are the upper oceanic crust, upper part of the oceanic crust is almost filled with the MORB. Na, earth surface, you can say earth surface. MORB is the most voluminous rock in earth surface. Na, so basically MORB is directly formed, or you can say just basalt. Basalt is directly formed from the partial melting of mantle material. Mantle material. Okay, partial melting of mantle material. Basalt is directly formed from partial melting of mantle material. Now, thing is how MORB is generated. Okay, how MORB is generated. So basically, you know the process. You know the plate tectonics thing that first the rifting occurs. Okay, a plate rips from the बीच में से वो टूट जाता है ठीक है आफ्टर रिफ्टिंग what happens
the pressure, the lithostratigraphic pressure over the magma over the mantle materials is released. Na? So after the lithostratigraphic pressure is released over the mantle material, so the melting point of the mantle materials will decrease or increase. डिक्रीज ना दोस्तों, तो मेंटल जब प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा हो जाता है, प्रेशर जब घट जाता है मेल्टिंग पॉइंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, so that's why in high lithostratigraphic pressure, this is your crust, this is your crust, and this is your mantle. Consider this is your mantle or upper mantle or lower mantle, the whole mantle you can say. Now this continental crust is around 33 kilometer thick. This thing is this continental crust is generating a pressure over this mantle material. Okay, now this mantle is semi-solid, you know, or you can say solid capable of flowing. Okay, now what is happening when this crust gets fractured and separated, gets rifted, then the pressure over this material is released. So now the melting point of this material will decrease, and these mantle materials will be melted easily because the melting point decreases. Okay, now the thing is this mantle material will be started melting. Okay, this is called as decompressional melting. So decompressional melting. Okay, decompressional melting. दिस इज कॉल्ड एज डीकम्प्रेशनल मेल्टिंग. कंप्रेशन था, डीकम्प्रेशन हुआ और मेल्टिंग हो गया. ठीक है, नाउ द थिंग इज दिस डीकम्प्रेशनल मेल्टिंग डायरेक्टली चैनलाइज ए पाइप, or you can say directly channelize a like a way, like a path to the mantle. Okay, like a path to the mantle. So now this mantle material will start melting, or the mantle material coming from the below, that will also the convection current, na, the convection current is going on. The convection current is going on. So now the convection current is, as the convection current is going on, now the thing is it may be the upper mantle material or maybe the lower mantle material, because the convection current is going on. MORB is the rock which like proves that there is a convection. Okay, MORB is the rock which proves there is a convection, because in MORB it may come from the upper mantle, it may come from the lower mantle, because the convection is going on, na? Convection is going on. So now this is rifted zone. Okay, this is the rifted zone. Now this is the like your mantle. Okay, this is your lower mantle, and this is your upper mantle. This is your upper mantle. Now the convection is going on. Convection is going on. Okay, now the thing is this like erupting lava. This erupting lava may be of the upper mantle or maybe of the lower mantle, because of convection going on. If it taps the upper mantle, we say that it is as N-MORB. Okay, N-MORB. And if it taps the lower mantle, means it comes from the lower mantle, then it will be called as E-MORB. Okay, E-MORB. Now tell me one thing. The upper mantle is enriched in incompatible elements, or the lower mantle is enriched in incompatible elements. Yes, the lower mantle, because the lower mantle is already a primitive magma or a primitive material, but the upper mantle is highly fractionated from the origin of Earth. Na, upper mantle is continuously undergoing fractionation, continuously undergoing fractionation. Okay, that's why upper mantle is totally depleted in the
REs or LILEs, HFSCs, these elements. Okay, but the lower mantle is highly enriched in these elements. So now the thing is, when this MORB taps the upper mantle or comes from the upper mantle, this N MORB will be depleted in nature. But in the same case, E MORB will be enriched in nature. Enriched in nature. You getting this, na? So N MORB will be depleted. So this is called as normal MORB. Okay, and this is called as enriched MORB. N MORB, E MORB. So MORB has basically two types, N MORB and E MORB. Okay. Yes, Ankita. Okay, now tell me one thing. Water content. Water content. So you already know that the there is a paper, research paper on this water content. There is जितना भी वाटर अर्थ में है ना तो उससे कहीं ज्यादा वाटर हमारा mantle में है, यू नो दैट। यू हैव तुमने कहीं सुना होगा ऐसा कुछ, ठीक है। उसमें एक पेपर आया था, उसके ऊपर mantle क्यूमुलेट्स एंड हाइड्रोस कंटेंट के ऊपर एक पेपर आया था कि हमारा ओशियन ओशियन में भी जितना पानी है उससे भी कहीं ज्यादा गुना पानी mantle में है, ठीक है। बट this is not in the water nature, this is associated with the elements, okay, so this is not like in the ocean form. So you know that N MORB is hydrous or E MORB is hydrous, anyone? So basically, I am telling that a upper mantle is hydrous in nature or lower mantle is a hydrous in nature. I am asking that. Yes. So the lower mantle has more hydrous content, okay, than that of the upper mantle. You can say E MORB has higher H2O content, okay, because it taps the lower mantle, and N MORB has lower H2O content, okay, lower H2O content, ठीक है। Okay, so this is the basic difference between E MORB and N MORB. Other differences are there. We will see in the slide. And you, yes, Kostur. Your E MORB is hydrous in nature. Okay, E MORB is hydrous in nature, or you can say higher H2O content, and N MORB has lower H2O content. Okay, apart from that, other things are there. We'll see in the slide. Okay, you already know. So I have taught you about the petrogenesis of basalt, MORB, and the basic classification about N-MORB and E-MORB. Apart from that, you already know what is the composition of basalt. Anyone, what is the composition of basalt? Go to the slides and see what I have left. So most voluminous volcanic rock in are produced by fractional crystallization within magma chamber formed under reducing conditions. Okay, this is in the formed under reducing conditions. So basalts basically are reduced in nature. Okay. So plutonic equivalent of gabbro-diorite anorthosite, and there is no plutonic equivalent of anorthosite. Okay. Petrogenesis, I have already told you, separation of plates, upward motion of mantle material, decomposition or partial melting associated with neo-adiabatic rise. Okay, so this thing you know, all the rises from mantle are neo-adiabatic in nature. Okay, neo-adiabatic in nature. What is adiabatic? Adiabatic relates to constant energy, and heat is a energy. So it is a energy. So adiabatic rises, although uprises from the mantle, is of constant heat in nature. That means it does not exchange heat with the surrounding material. जो भी rise होता है mantle से near adiabatic रहता है. Why near adiabatic? Why not fully adiabatic?
क्योंकि क्योंकि हाँ, यस, that is, it is not a closed system actually. Okay, the rising, the mantle rising is a, the plume rising is not a closed system ना. तो वहाँ पे मटेरियल एक्सचेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, असिमिलेशन डिफरेंशिएशन होता रहता है, ठीक है. सो दैट्स व्हाई इट इज नियर एडियाबेटिक, so it is not a closed system. So this is the near adiabatic rise. And N-MORB melting initiates 60 to 80 kilometer depth, that is in the upper mantle. Okay, and depleted in trace elements. E-MORB plume is initiated with the lower enriched mantle. Okay, N-MORB type of upper mantle, lower mantle. MORBs are more homogeneous than OIB and subduction. Okay, MORBs are more homogeneous in nature than that of OIB and subduction zone magmas, because MORB directly comes from the mantle. Okay, directly it is a open area for the mantle to come out. But in case of OIB or in case of subduction zones, it undergoes assimilation and differentiation process. Okay, that's why MORB is more homogeneous than OIB and subduction zone magmas. Okay, so the difference between them are the, okay, petrography dominant phenocryst is olivine, only more evolved have CPX, तो पायरोक्सिन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है. जो जितना जितना अगर ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है, मतलब ज़्यादा डिफरेंशिएशन हो जाता है, देन CPX आएगा. So primitive lava composition is high MgO and most Fe4 tholeiitic basalt. So these are Fe4 tholeiitic basalt. That's why the dominant phenocryst is olivine na. Okay. So this is the difference between E-MORB and N-MORB. This is depleted, this is enriched, lower H2O content, higher H2O content, higher Fe and lower aluminium, higher aluminium and lower Fe. Okay, upper mantle, lower mantle, Mg number is greater than 65. This is also Mg number greater than 65. Keto content is low, keto content is high. Basically, E-MORB is enriched one na. So all the incompatible will be enriched in this E-MORB, but all the compatible will be enriched in the N-MORB. Okay. So like that, TiO2 and lanthanum by samarium and okay, lanthanum by samarium. Can you tell how this lanthanum samarium is less for N-MORB and for this is greater for E-MORB? The samarium content, na? The samarium content. Why this samarium content is likely high? It is samarium content is likely low. So I have already told you that mantle is higher in samarium, neodymium content, na. So when we are telling about mantle, okay, the lower mantle is enriched one, okay, the enriched one. So the upper mantle is a depleted one. So samarium lives there where depletion is more, na. Samarium lives there, so samarium will be in the N-MORB or in the upper mantle portion, ठीक है. सर लांथानियम samarium, लांथानम समारियम इसके लिए लिखा है हुआ है क्योंकि ये जो दो बात हो रहे हैं ना, एनमोर्ब एंड ईमोर्ब, दिस डिवीजन इज बेसिकली ऑन द like incompatible element enrichment. Okay, that's why lanthanum and samarium, because lanthanum and samarium has exactly opposite characteristic na. All the incompatible elements, all the, like you can say, all the Re elements are one side and this samarium and neodymium are in the other side. Okay, because elements enrich in the crust, but samarium neodymium उसका अलग ही चलता है भाई, वो mantle में ही रहेगा. Okay, that's why that this enrichment thing is there now between classified between N-MORB and E-MORB. That's why we have compared lanthanum and samarium. Okay, तो samarium का अलग ही चलता है, वो बस mantle में ही रहेगा, वो उसको क्रॉस का नहीं आना है, वो आ रही है फिर भी वो क्रॉस का नहीं आएगा, ठीक है. So that's the thing. So N-MORB defines isotopic end member of terrestrial volcanic array characterized by low, obviously low strontium and high neodymium ratio. That's one I was telling you. High samarium means high neodymium ratio. Okay, indicating their source has experienced long-term depletion in RB and SM. Okay, this interpreted to be a signature of convecting asthenosphere. तो ये जो सिग्निफाई करता है
एन मोर्ब ई मोर्ब दोनों के लिए ये लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि एन मोर्ब के लिए, मतलब ये डाटा के लिए ये नहीं है, ठीक है। ई मोर्ब एंड एन मोर्ब दीज शोज कन्वेक्टिंग आस्थेनोस्फीयर, क्योंकि क्यों क्योंकि हम लोग ई मोर्ब भी मिल रहा है सेम जगह में और एन मोर्ब भी मिल रहा है, ठीक है। तो उससे होता क्या है कि हम लोगों को पता चला कि mantle जो है वो कन्वेक्शन में है, जिसके वजह से एन मोर्ब भी आ रहा है और ई मोर्ब भी आ रहा है, ठीक है। ओके, दैट इज ऑल अबाउट मोर्ब। सी व्हाट इज कोमाटियाइट? सी, so Komatiite is a very unique rock. Okay, it's a very unique rock. Komatiite are only limited to Archean. Okay, Archean. So basically, Komatiite is high magnesium rock, high MgO content, greater than 15%. Okay, so that's how the Komatiite is also classified into two types. One is basaltic Komatiite, and there is peridotitic Komatiite. Okay, in basaltic Komatiite, 10% of MgO is there. In peridotitic Komatiite, 10% to 20% of MgO is there. Okay, so this is the classification. So Komatiite is a very interesting rock, and there is also a sample of Komatiite is available in SP Geology. Those offline students can look after that. Okay. So anyone in the institute or one second, let me check the camera. Thank you. So at that time, the liquid earth is there. So this is being solidified slowly, ये solidify हो रहा था। तो यहाँ पर जैसे you like you boil the milk ना, you boil the milk and that milk malai over the milk, okay, ଓଡ଼ିଆରେ ସର, the ସର ଆସିଯାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ like that when milk cools down na, when milk cools down there is a malai over there na, a small layer of malai, like that this crust was generating, and this is very much thin, okay, very much thin. So now this liquid was boiling, okay, this liquid was boiling. So now this crust actually don't forms, it continuously breaks, like if you have suddenly cooled a like no, in case of milk, okay, in case of milk, one second, no, এটা নয়, this is mica cyst. तो इन केस ऑफ मिल्क, जब वो उबल रहा होता है ना, मिल्क जब उबल रहा होता है तब देखना एक छोटा सा लेयर आता है ऊपर में, ठीक है। ठंडा होने के बाद वो लेयर मोटा हो जाता है, जो मलाई का लेयर होता है वो मोटा हो जाता है, बट जब उबल रहा होता है एक छोटा सा मलाई का लेयर आता है जो कंटिन्यूअसली फटता रहता है, इधर से उधर से जहां से भी वो आएगा ना, नीचे से गैस आएगा, वहां से कंटिन्यूअसली वो ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो लाइक दैट सिचुएशन वाज देयर इन आर्कियन टाइम, okay, that situation was there in Archean time. The crust is continuously forming and breaking, okay, but the mantle has not fractionated, okay. Or you can say, the thing, the age of core is estimated to be 1.5 billion years only. Age of core, that means core formed from the liquid earth about 1.5 billion years ago. Okay, this is estimated. कोर उससे पहले 1.5 बिलियन ईयर्स पहले कोर नहीं था, ठीक है। धीरे धीरे जो डेंस मटेरियल है वो जाके नीचे जाके वो कॉम्पैक्ट हो के कोर बनाए, अर्थ का कोर बनाए, ठीक है। इट इज ए हाइपोथेसिस, ओके, देयर इज नो सॉलिड प्रूफ फॉर दिस। So this is the thing, like that there is whole liquid over the earth, okay, whole liquid. So mantle has not fractionated, this core is not generated, okay, was not generated, and the crust has not also generated. So the whole like the whole earth, whole liquid is unfractionated, okay. At that time the ferromagnesium content was very high,
तब जो भी लिक्विड तुम निकाल लोगे उसमें फेरोमाइनासियन कंटेंट ज़्यादा ही होगा, क्योंकि उसमें फ्रैक्शनेशन नहीं हुआ है, डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, कुछ ग्रेविटी सेटलिंग नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, पूरा प्योर मिक्सचर हो गया वो। ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, नीचे जो फेरोमैग्नीशियन निकल, जो निकल और आयरन मटेरियल है, वो नीचे आके क्या हुए, कोर में आके पहुंच गए। ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शनेशन होके जो भी फेल्सिक मिनरल्स है वो क्रस्ट को चले गए। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो वो जो कंडीशन था, वो जो थर्मल, दैट थर्मल कंडीशन एंड दैट compositional condition only leads to the formation of komatiite. Okay, as the conditions are not like the Archean time, so now or after the Archean time you cannot find any komatiite. And as you know, komatiite is only Archean time, so where can you find komatiite? Komatites are generated only in the Archean time, so where can you find the komatite rocks? Not Dharwar. Okay, not Dharwar. We can find this in cratonic regions. Okay, stable cratons exactly. So we can find these comatites in the cratonic region, because the only thing that is remaining from the Archean time is the craton. ओके। सो क्राटन में जो होता है, जो ग्रीनस्टोन बेल्ट्स रहते हैं ना, क्राटन में जो ग्रीनस्टोन बेल्ट्स रहते हैं, वो ग्रीनस्टोन बेल्ट में ज्यादातर कोमाटाइट मिलता है। ठीक है, व्हाई दिस ग्रीनस्टोन बेल्ट इज एनरिच्ड इन कोमाटियाइट, आई एम जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन, बस बेसिक चीज बता दे रहा हूँ, बाकी तुमको पढ़ाऊंगा स्ट्रैटिग्राफी में। ठीक है, कि जब this malai is breaking na, this malai is breaking, so this was the first malai, and this malai broke, and after that a small basin is formed, right? Small basin is formed. Okay, and this comatitic magma, this got segregated here. Okay, this got segregated here. After that, what happened, these rocks, these segregated rocks, these undergoes melting. ओके, ये जो रॉक था, आज तो लिक्विड इज हियर, सो ये जो रॉक्स थे ये भी मेल्टिंग में गए। ठीक है, ये भी मेल्टिंग में गए, ये मेल्टिंग होके जब आए, वो असिमिलेशन शुरू हुआ, वहां से असिमिलेशन शुरू होके ये आके यहाँ पर डिपॉजिट हुआ। ठीक है, यहाँ पर डिपॉजिट हुआ, उसके बाद इरोजन स्टार्ट हुआ, इरोजन स्टार्ट होके यहाँ पर क्या हुआ, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, क्यूपीसी टाइप ऑफ सेडिमेंट्स। ओके, यूपीसी टाइप ऑफ सेडिमेंट। तो ये होता है ग्रीनस्टोन बेल्ट का कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज इन थ्री डिविजन्स। ग्रीनस्टोन बेल्ट्स आर थ्री डिविजन्स। ओके, थ्री पार्ट्स होते हैं, एक लोअर कोमाटाइट रिच, अपर 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 का तो पर्टिकुलरली याद नहीं आ रहा है मुझको, मतलब वो टर्म, और ऊपर वाला क्यूपीसी वाला होता है। ठीक है, क्यूपीसी थ्री लेयर होते हैं, मैं स्ट्रैटिग्राफी में तुमको पढ़ा दूंगा कि कैसे ग्रीनस्टोन बेल्ट फॉर्म होता है और कैसे वहां पर मिलता है। तो लोअर वन इज द कोमाटाइट रिच वन। ओके, कोमाटाइट रिच वन, ये आर्कियन टाइम में फॉर्म हुआ था, लेकिन वो क्या हुआ, वो जैसे ब्रेक कर गया, वो नीचे चला गया, फिर से मंटल में चला गया। तो जो भी रह गया है वो क्राटन में रह गया, ये जब ब्रेक किया तो कंसीडर दिस इज ब्रोकन, सो नाउ दिस, इफ दिस थिंग रिमेन्स, दिस विल बी कॉल्ड एज क्राटन, दिस विल बी कॉल्ड एज क्राटन ओनली ना। तो ये क्राटन हो गया। तो अभी यहाँ पर जब इंट्रूजन होके कोमाटाइट्स फॉर्म्स हुए थे, अभी ये जो अगर ये कोमाटाइट क्राटन में चले आए हैं, तो वो कोमाटाइट रह जाएगा क्राटन में। ठीक है, और जो ग्रीनस्टोन बेल्ट में भी जो ग्रीनस्टोन बेल्ट रह गया है, वो ग्रीनस्टोन बेल्ट विल बी इन द क्राटन ओनली। ओके, so this is the thing, how this comatite is limited to Archean only, because simply the thing is the Archean conditions is not available in this time, or after the Archean time this thermal observe or this thermal condition was not there, so that's why comatite is limited to the Archean only. Okay, now the thing is, as comatite is erupting, okay, this is getting chilled, this is getting chilled. ओके, क्योंकि क्या हुआ, ये mantle से सीधा निकला है। ओके, it will release instantly all the heats, this liquid after eruption, this will release all the heats. Okay, so it will be chilled. So after chillization, what it will do, it will develop a texture.
Okay, it will develop texture that is called as the spinifex texture. Spinifex texture. Okay, that is called as the spinifex texture. That is like this is this type of texture is that. That is called as also a bunch of grass. Bunch of grass texture. Okay, bunch of grass. Like you are holding a bunch of grass na, so like that only the spinifex texture looks. If the rock if I had the मतलब रॉक होता ना अपने पास वो सैंपल है हमारे ये इंस्टीट्यूट में है, तो उसमें पूरा दिख रहा है कैसे पंच ऑफ ग्रास टेक्सचर कैसे दिखता है, ठीक है, पूरा दिख रहा है कि वो टेक्सचर कैसे दिख रहा है पूरा मेगास्कोपिकली, दिस फॉर्म्स मेगास्कोपिकली नॉट माइक्रोस्कोपिकली। ओके, दिस फॉर्म्स मेगास्कोपिकली, तुम देख सकते हो रॉक में पूरा कैसे दिख रहा है, पूरा ऐसे रॉड्स दिखते हैं उसका, ओलिविन और पायरोक्सिन, ओलिविन एंड पायरोक्सिन रॉक, पायरोक्सिन रॉड्स। ओके, रॉड्स पूरा दिखते हैं ऐसे, ठीक है। these are the spinifex texture formed by the chillization and only this कोमाटाइट shows the spinifex texture because of this condition। ओके, ये जो आर लिक्विड है ये इरप्ट हो जाता है और इंस्टेंटली कूल हो जाता है, इंस्टेंटली कूल होकर ऐसे ओलिविन पायरोक्सिन का रॉड फॉर्म करता है, ठीक है। दिस ओनली कोमाटाइट इज shows this spinifex texture। Alright, so not all कोमाटाइट shows the spinifex texture, that is another condition, ठीक है। ये अनदर कंडीशन है कि सब कोमाटाइट स्पिनिफेक्स टेक्सचर नहीं दिखाते, क्योंकि सब टेक्सचर ऐसा नहीं है कि पूरा रैपिड कूलिंग हो गया, जो पहले इरप्ट हुआ था वो रैपिड कूलिंग हो गया, उसके बाद जो आएगा तो वो रैपिड कूलिंग धीरे धीरे कूल होगा, रैपिड कूलिंग नहीं जाएगा क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी एक कोमाटाइट का लेयर होगा। सो द कोमाटियाइट व्हिच शोज द स्पिनिफेक्स टेक्सचर, दिस इज कॉल्ड एज एसपीटीके, एसपीटीके, spinifex textured कोमाटाइट, spinifex textured कोमाटाइट। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एसपीटीके। ओके, जो भी कोमाटाइट तुम्हारा स्पिनिफेक्स टेक्सचर दिखाता है उसको एसपीटीके बोलते हैं। बेसिकली दिस इज द ओरिजिन ऑफ कोमाटाइट। You know komatite has MgO, high MgO content, and it is of two types, basaltic komatite and your periodic komatite. Basaltic komatite has 10% of MgO, okay, and periodic komatite has 10 to 20% of MgO, okay. So these are two types, and we are moving to the slides. Let's see what is left. So the family komatite given to a mafic, okay, it is the introductory komatite, okay, introductory komatite means this onvorwatch group of Barbadan greenstone belt in South African craton. First komatite is introduced here, okay, first komatite is introduced here. In the lower ultramafic unit, I have said na, the greenstone belts have 3 units, okay, 3 units. In the lower units, komatite is there, okay, komatite remains, okay. So in the upper unit QPC, maybe this one is the metamorphic greenstones. Sorry, green cyst metamorphic cases maybe. So ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं स्ट्रैटिग्राफी के टाइम बोल दूंगा तुमको, ठीक है, अच्छे से। So most distinctive chemical character is high MgO content, okay. So basaltic कोमाटाइट, periodic कोमाटाइट, MgO content is 10 to 20%। in case of basaltic कोमाटाइट थोड़ा गलत बोल दिया था, इसको सही कर लो। Basaltic कोमाटाइट has greater than 10% or 10 to 20% of MgO content, and periodic कोमाटाइट has greater than 20% of कोमाटाइट, ये जो MgO content, okay, and TiO2 content is less than 1% in case of periodic कोमाटाइट। Olivine is rich in phosphatic component, okay. In case of periodic कोमाटाइट, olivine is rich in phosphatic component। That means जो phosphorite से phyllite होता है ना, तो phosphorite ज्यादा रिच होता है किसमें, periodic कोमाटाइट में, ओके। टेक्सचर chilled spinifex टेक्सचर, ओके, एंड एसपीटीके spinifex टेक्सचर कोमाटाइट, एसपीटीके बोलते हैं इसको। एंड पायरोक्सिन वेरीज फ्रॉम ऑगाइट टू सहालाइट, ओके, पायरोक्सिन जो पायरोक्सिन होता है वो वेरीज फ्रॉम ऑगाइट टू सहालाइट। CF4 pyroxene is rare, CF3 pyroxene, so you just see the petrography क्या क्या रहता है क्या क्या नहीं। क्रोमियम इज कॉमन एसोसिएट, ग्लास इज ओपन विट्रिफाइड, दैट मीन जो भी ग्लास रहते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, ठीक है। सो फैक्टर्स टू कंसीडर एज कोमाटाइट,
This thing is important. To which rock we will call as komatiite? So first of all, MgO content is 10 to 30%. High Mg by Mg plus F. So high Mg by Mg plus Fe ratio, other rock के हिसाब से Ca by Al23 is greater than 1, TiO2 is less than 1%, and higher nickel and chromium content. So these particular things are the characteristic of a komatiitic rock. Okay, you just go through these things. Petrogenesis, already I have told you how petrogenesis is going on, and this thing, degree of melting ranges from 45 to 65%. That means very high degree of partial melting. Okay, very high degree of partial melting. So the thing is, this is itself in a thing कि ऑलरेडी जब कोमाटाइट फॉर्म हो रहा था तब लिक्विड था, ठीक है, तब mantle लिक्विड था. नाउ द थिंग इज, if if there is a solid in the mantle, if it undergoes 45 to 65% melting, that means high degree of partial melting, then only can be komatite be formed. Okay, तो mantle continuously mantle is getting solidified, mantle liquid भी था. ओके, mantle भी solidify हो रहा था ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ क्रस्ट ही solidify, क्रस्ट ही बन रहा था. तो अगर क्रस्ट बन रहा है तो mantle solidify हो रहा है ना, नहीं? क्यों? क्योंकि ये हीट रिलीज कर रहा है, mantle हीट रिलीज कर रहा है, तो mantle भी solidify हो रहा है, क्रस्ट भी बन रहा है. तो after that solidification, if any komatiite is formed, then that is formed by the high degree of partial melting. That means almost everything is melted. 35 to 65% melting is very high degree of partial melting actually. This is not, it will be not called as partial melting, it is called as melting. Okay, yes, Nitish. So so ये हो गया तुम्हारा कोमाटाइट का पेट्रोजेनेसिस. एंड इंडियन ऑकरेंसेस, जो भी क्रैटन्स है तुम लोग लिख सकते हो, सब क्रैटन में लगभग मिलते हैं. अरावली का अभी तक में रिपोर्ट कुछ नहीं मिला मुझको, ठीक है, लेकिन बट धरवार में मिल जाता है, सिंहभूम में मिल जाता है, बस्तर में भी मिल जाता है, ठीक है. बुंदेलखंड में भी लगभग मिल जाता है, बट दीज आर वेरी वेरी लाइक वेरी रेयर लोकेशंस. ओके, क्योंकि कोमाटाइट जो है होता है ना, वो देखो, ओलिविन पाइरोक्सिन है, तो ओलिविन पाइरोक्सिन इज वेरी मच प्रोन टू वेदरिंग. ओके, तो ये जो तुमने सैंपल देख रहे थे ना, ये भी पूरा कोमाटाइट नहीं है, ठीक है, मतलब ये पूरा वेदर्ड चीज है, वेदर्ड है, उसके ऊपर अपर पोर्शन से हम लोग उठाया था, ठीक है. ऐसा एक पूरा बहुत छोटा सा आउटक्रॉप है उसमें, वहाँ पे बहुत छोटा सा आउटक्रॉप है पूरा पहाड़ी के ऊपर. सो ये चीज़ है. सो इन क्रैटन्स कोमाटाइट मिलता है. बाकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें पीजी ज़्यादा रहता है, निकल रहता है, और गोल्ड भी कुछ पार्ट में रहता है, ठीक है. तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट वो रहता है. बाकी तो तुम लोग जो रिसर्च करेंगे वो लोग आर्कियन में कैसे था, वो डायरेक्ट सैंपल है क्या, कोमाटाइट इज द डायरेक्ट सैंपल फ्रॉम द आर्कियन टाइम, ठीक है. सो दैट इज ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट. ओके, so these are the zones where you can find komatiite. Okay, the red zones. Okay, these are not very large. Thus, they are small outcrop is there. Okay, जहाँ भी है छोटा छोटा outcrop है, बस बहुत छोटा छोटा पार्ट है जहाँ पर मिलेगा कोमाटाइट. Okay, so this is the microscopic one, how this texture looks. And this is the upper layer of komatiite, this is the lower layer. In the lower layer of komatiite or in the inner layer, it shows olivine cumulate zone. Okay, वहां पर क्या होता है, क्यूमुलेट्स ऑफ ओलिविन बनता है, क्योंकि वो बहुत क्या होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है. अपर पार्ट जो है वो वेरी हाईली बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए अपर पार्ट जो है स्पिनिफॉक्स दिखाता है और लोअर पार्ट क्यूमुलेट्स दिखाता है. Okay, this is not important. This is the chemistry of komatiite. You can see, go to the slides. This is the for regarding komatiite. First paper, first reported. Okay, reported in the Overwatch group of the Barbadon area. Okay, Barbadon Greenstone belt. This is the first paper regarding komatiite. Okay,
published. Okay. तो दीज आर स्पिनिफेक्ट टेक्सचर लेयर्स। ऐसे भी होता है, मतलब ये भी कोमाटाइट है, इसको घास मत समझना। ऐसे भी कोमाटाइट दिख सकता है, ऐसे भी हो सकता है, मतलब ऐसे भी कोमाटाइट अवेलेबल है। ठीक है, बहुत रेयर है, बट मैंने जो दिखाया वो कॉमन है। ठीक है, दिस वन, दिस रॉक। ओके, ये ऐसे ही है। ये है, एक कोर है। ठीक है, कोर प्रोडक्ट है। तो ये सही दिखता है ये, द पंच ऑफ ग्रास। ठीक है, दिस इज द स्पिनिफेक्ट टेक्सचर। उसका वेराइटीज भी है। रैंडम स्पिनिफेक्स, जो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ओरिएंटेड स्पिनिफेक्स, एक ही तरह ओरिएंटेड होंगे सब लोग। ठीक है, सब रॉड्स जो है एक ही तरफ ओरिएंटेड होंगे। दिस इज ओरिएंटेड स्पिनिफेक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन प्लेट स्पिनिफेक्स। ओके, ऐसे ऐसे डेवलप हुए हैं ये प्लेट स्पिनिफेक्स। ओके, these are the microscopic layers of spinifex, olivine and pyroxene. Okay, olivine and pyroxene. So this is all about komatiite. So your CIPW norm, this is CIPW norms. It is developed by four scientists: Cross, Edding, Pearson and Washington. So CIPW. Okay, after IUGS classification, this CIPW norm is also followed. Okay, what actually CIPW norm indicates? It calculates, or it defines a rock. It defines a rock based on the presence of oxides. Okay, based on the presence of oxides, which oxides are coming. Okay, which oxides are coming, that which oxides are available in that rock, that is calculated based on the CIPW norm. Okay, in case of this CIPW norm, what happens? It assumes, the CIPW norm assumes that the magmas are hydrous. Okay, magmas are, sorry, anhydrous. Okay, तो वहां पर हाइड्रोस कंटेंट कुछ है नहीं। तो बाकी वो क्या करेगा, वो सब क्या करेगा, लाइक SiO2, TiO2, P2O5, CaO, MgO, Al2O3, ये सब सब ऑक्साइड, जितना भी ऑक्साइड अवेलेबल है, उसको लेके क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उसको लेके कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करके मिनरल फॉर्म करेगा। ठीक है, इट विल फॉर्म मिनरल्स लाइक इन द बायो इंस्ट्रक्शन सीरीज, जैसे भी हो रहा है वैसे ही वो फॉर्म करेगा मिनरल धीरे धीरे। वो क्या करेगा, पहले तुम लोगों को अगर एक टेबल में दे दूं, तो वो टेबल में रहेगा कि एक लाइक योर ए रॉक 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 का एक ऑक्साइड का कॉम्पोजिशन, ये इतना 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 मोल्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों को अलॉट करना पड़ेगा। ठीक है, एक पूरा प्रोसेस है उसका, 29 स्टेप्स हैं उसमें, तो वो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ प्रैक्टिकल्स के लिए है। बाकी ये जो चीज़ है कि वो ऑक्साइड बेस में कैलकुलेशन करता है। ऑक्साइड को क्या करता है, ये करता है, तुम लोग एक थिंग देखे होगे कि इन केस ऑफ SCF एंड AKF डायग्राम क्या होता है, A इज माइनस, सॉरी, SCF, C C is equal to CaO minus 3.33 P2O5, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, C in case of SCF diagram, this C is minus 3.33 P2O5. Why? Because this P2O5 consumes CaO to form phosphate. Okay, तो that the thing. Okay, तो नॉर्म जो CIPW नॉर्म वही काम करता है। वो क्या करता है, एक दो ऑक्साइड लेता है, उससे मिनरल फॉर्म करता है। ठीक है, तो मिनरल फॉर्म करता है, तो अभी जो मिनरल ज़्यादा डोमिनेंट होगा उसी में हम लोग लिखते हैं, जो तुम लिखते हो कि बहुत जगह तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉस्फोरस इज डोमिनेंट इन द नॉर्म, इल्मेनाइट इज डोमिनेंट इन नॉर्म, मैग्नेटाइट इज डोमिनेंट इन नॉर्म, ऐसे बहुत जगह लिखा होता है। ठीक है, तुम लोग जब रॉक्स पढ़ोगे ना तब देखोगे कि कहाँ पर ये दिस मिनरल इज डोमिनेंट इन द नॉर्म। दैट मीन्स जब हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं CIPW का, तो वो जो मिनरल वो निकलता है। तो दिस कैलकुलेशन हैव टोटल 29 स्टेप्स। Okay, 29 steps, so you can go through those steps
कि कैसे होता है, वो तुम देख सकते हो, ठीक है, पढ़ सकते हो। ऐसे एक अगर टेबल दिया होता है कि मोलार वेट इतना इतना रहता है, ठीक है, इतना इतना मोलार वेट रहता है, तो मेथड फर्स्ट क्या करते हैं, कैलकुलेट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑक्साइड बाय डिवाइडिंग बाय देयर मोलिकुलर वेट। तो इसमें पहले इसका मोलिकुलर वेट को डिवाइड करके उसका प्रोपोर्शनल वेट निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आर एम एन ओ टू एफ यू। सो ये दिस कंसिडर दैट एम एन ओ जहाँ जाएगा एफ यू वहाँ जाएगा, ठीक है। सो एफ यू एम एन ओ को ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद allocate CaO इक्वल टू 3.33 P2O5 टू अपाटाइट, सॉरी मैं फॉस्फेट बोला था, अपाटाइट। तो वही अपाटाइट फॉर्म होगा ना, तो अपाटाइट फॉर्म होगा, तो अपाटाइट के लिए 3.33 P2O5 चाहिए और CaO चाहिए, मतलब 1 मोल CaO चाहिए और 3.33 P2O5 चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करेगा ये, कंसीडर यहाँ पर मोलिकुलर वेट डिवाइड करने के बाद मोल निकल आएगा। तो वहां से ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि P2O5 क्या होगा, अगर CaO 56 है, कंसीडर CaO इज 5 मोल्स, देन उसी के हिसाब से 3.33 P2O5, दैट मीन्स 5 3 15 15 पॉइंट समथिंग, और जितना भी हो रहा है उतना P2O5 चला जाएगा और वहां अपाटाइट आ जाएगा। तो दिस मिनरल, दिस रॉक विल कंटेन अपाटाइट, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक एक स्टेप फॉलो करके जाना है, पूरा पूरा जो यहाँ पर कैलकुलेशन है ना, वो कैलकुलेशन के लिए पूरा ये जो 29 स्टेप्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। 24 स्टेप्स, सॉरी 24 स्टेप्स उसको फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन लगभग 18 15 एक्सेस एमजीओ 18, हाँ, यहाँ पर लगभग हर चीज खत्म हो जाता है इफ इट इज ए सैचुरेटेड रॉक। if it is a saturated rock, that means सिलिका सैचुरेटेड रॉक। अगर ये सिलिका अंडर सैचुरेटेड निकला तो तुमको सब चीज फिर रिकैलकुलेशन करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ चीज ये जो स्टेप्स हैं ये रिकैलकुलेशन करना पड़ता है, क्योंकि तुम लोग क्या किए हो, सिलिका को अलॉट करते आ रहे हो, ओलिविन फॉर्म करेगा, पायरोक्सिन फॉर्म करेगा, प्लाजियोक्लेज फॉर्म करेगा, सिलिका को देते आ रहे हो। लास्ट में क्या देखा, तुम्हारे पास 10 सिलिका था, लेकिन तुमने इतना मिनरल फॉर्म कर दिया कि अभी 8 सिलिका है, मतलब सिलिका -2 में चला गया, मतलब तुम्हारे पास है नहीं, तुमने अलॉट कर दिया। तो दैट इज द अंडर सैचुरेटेड रॉक, ठीक है। तब जो रॉक है वो अंडर सैचुरेटेड हो गया, दैट मीन्स यू हैव टेकन द कंपोजिशन ऑफ ए अंडर सैचुरेटेड रॉक, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू फिर रिकैलकुलेट करना पड़ेगा तुम लोगों को। उसके बाद सिलिका अंडर सैचुरेटेड का एक रॉक निकलेगा कि ये भाई रॉक है और उसमें ये मिनरल डोमिनेंट फेजेस है, ठीक है। दिस इज CIPW नॉर्म। तो एक बार तुम लोग CIPW नॉर्म पढ़ोगे और इसको अगर तुम लोग, हाँ, दिस इज अनदर टास्क फॉर यू, ओके। वो तो 5 मार्क्स का था, ओके। ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द मोलर ऑफ SiO2, लाइक सिलिकॉन का 16 × 2 हो गया, ऑक्सीजन का, सिलिकॉन का कितना 28, तो 28 ये हो गया 32, 28 + 32 दैट इज इक्वल टू, अब 10 शून्य एक के 3 5 के 60। सो SiO2 को हो गया 60 हो गया, तो यू जस्ट डिवाइड 60/60 मोलिकुलर वेट, इट विल बी ऑफ 1। देन TiO2, TiO2 का कितना है ये, अच्छा ये मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, सॉरी